There's no branch of medicine that exists where a dead organ is left in, except in dentistry where a root canal is left in. If a guy's got a gangrenous toe, you gotta cut the toe off because it's bacterial infested and it's toxic and it's gonna kill the patient. If you think that you can get away with an infected toxic tooth and not have a systemic consequence, I think you're deluding yourself. क्या आप जानते हैं कि आपका कराया हुआ रूट कैनाल आपके लिए कई बीमारियों को इनवाइट कर सकता है? एक रीसेंट स्टडी के हिसाब से 93% ब्रेस्ट कैंसर वाली औरतों का जब पास्ट देखा गया तो पता चला कि कभी न कभी पास्ट में उन्होंने रूट कैनाल कराया हुआ था। रूट कैनाल होता क्या है? रूट कैनाल से भी बीमारियां हो सकती है। रूट कैनाल से क्या क्या बीमारियां हो सकती है? रूट कैनाल से कैसे अलग अलग ऑर्गन्स में इफेक्ट हो सकता है? सवाल मन में ये भी आ सकता है कि मैंने भी तो कराया है रूट कैनाल, मुझे क्यों नहीं हुआ अभी तक? फाइनली यदि मेरी बीमारी मेरे उस रूट कैनाल वाले टूथ से संबंधित है तो इसका उपाय क्या है? क्या कर सकते हैं इसको ठीक करने के लिए? इन सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कौशल है और आप देख रहे हैं के रिसर्च स्टूडियो। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर जो आया हूँ वो बहुत ही कॉमन सर्जरी है इंडिया का। ना केवल इंडिया का, एक्चुअली देखा जाए तो पूरे दुनिया का ये बहुत ही कॉमन सर्जरी है। जिसको देखो वही रूट कैनाल करवा रहा है। ये बहुत पुरानी सर्जरी है। एक्चुअली 100 साल से ऊपर से ये सर्जरी हो रही है पूरी दुनिया भर में। मेरे घर में भी लोगों ने रूट कैनाल करवा कर रखा हुआ है। आजकल का फैशन बन गया है रूट कैनाल, और बहुत ही सस्ता एडवाइस भी है। दांतों में दर्द हुआ, तुरंत कोई बोलेगा भाई इन्फेक्शन हो गया होगा, जाके रूट कैनाल करवा ले। इट्स वेरी इजी, 6 से 10 हज़ार में हो जाएगा, बस बड़े हॉस्पिटल में मत पहुंच जाना। तो सबसे पहले रूट कैनाल होता क्या है, चलिए जानते हैं इसके बारे में। You're going to need a root canal. Now, if you've never seen one done before, brace yourself, because this is a root canal. They drill into your tooth, extract the root, fill it with gutta-percha, and you're on your merry way. आज का रिसर्च बेस्ड है उस रिसर्च पर जो आज से कई साल पहले 1925 में डॉक्टर वेस्टन ए प्राइस ने अपने 60 सहयोगियों, मतलब 60 रिसर्चर्स के सहयोगियों के साथ लिखा, साथ इसके ऊपर रिसर्च किया, जिसने डेंटिस्ट कम्युनिटी में बवाल मचा दिया था इस रिसर्च पेपर में। फिर बाद में उस रिसर्च को ADA और अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ओडोंटोलॉजी ने मिलकर दबा दिया, और फिर इस रिसर्च की चर्चा पूरे तरीके से बंद कर दी गई। 1925-1930 की बात है ये। जब तक कि डॉक्टर थॉमस राव, ये जब इंटरनेट का दौर आया, जब पुराने बुक्स को भी ऑनलाइन किया गया, और इसी बीच एक स्विट्ज़रलैंड के एक डॉक्टर थॉमस राव ने ये बुक पढ़ी, ये रिसर्च पढ़ा, डॉक्टर ए वेस्टन प्राइस का ये रिसर्च पढ़ा। और चूँकि इस डॉक्टर थॉमस राव का अपना खुद का कैंसर क्लिनिक था स्विट्ज़रलैंड में, उसने क्या किया, उसने अपने सारी करीबन 150 ब्रेस्ट कैंसर वाली पेशेंट्स का डिटेल निकाला, और जब टेस्ट किया तो पाया कि 147 आउट ऑफ 150 पेशेंट्स हैड 1 और मोर रूट कैनाल डन इन देयर पास्ट, एंड ऑल ऑफ द रूट कैनाल, जो रूट कैनाल जिस टूथ पे किया गया था वो टूथ का मेरिडियन, इट वाज कनेक्टेड टू द ऑर्गन वेयर दे फाउंड द कैंसरस सेल्स। आते हैं अपने दूसरे सवाल पे, रूट कैनाल से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं? तो इससे कैंसर हो सकता है, जैसा कि आपने अभी देखा। 98% of women that have breast cancer have a root canal tooth on the same side as their offending ऑटोइम्यून breast डिसऑर्डर वाली बीमारियां हो सकती है, जैसे कि एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो गया, आर्थराइटिस हो गया, सोरियासिस हो गया, एटसेट्रा। बेसिकली किडनी लेवल पे, डाइजेस्टिव सिस्टम लेवल पे, लिवर लेवल पे, इन सब जगहों को ये टूथ मेरिडियन जहाँ पर आपका रूट कैनाल होकर रखा है वो इफेक्ट कर सकता है। अब सवाल है कि कैसे ये हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है, कैसे ये हमारे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। इसको आंसर करने से पहले हमें ये समझना होगा कि हमारे दांतों का हमारे बॉडी से क्या संबंध है।
each tooth actually lies on a different meridian. So those energy pathways that we discussed, they go through particular areas. So if we're looking at the wisdom teeth, we're talking about a small intestine and a heart. As we move forward on the top and we have these molars, then we're looking at breast, we're looking at thyroid. On this side, we're looking at pancreas. On this side, we're looking at spleen. Then we move forward to the bicuspids and their lung and large intestine. We go to the eye teeth, and it's called an eye tooth for a reason, because it's connected to your eye. It's also connected to the liver and to the gallbladder. And then these four front teeth, top and bottom, are connected to the urinary tract, to the anal canal, to the adrenals, to the pituitary, to your kidney, everything that's related to that urinary tract. तो आपने जान लिया कि हमारे रूट कैनाल वाले जो टूथ्स थे, उनके जो मेरिडियन थे, उनका कनेक्शन हमारे बॉडी से था। हमारे हर टूथ का, ऊपर नीचे हर टूथ का आपने देख लिया कि कैसे इनका संबंध हमारे अपने ऑर्गन्स, बॉडी के ऑर्गन पार्ट से होता है ना। ये होता कैसे है और क्यों होता है? बेसिकली रूट कैनाल यदि हम लोगों ने करवाया तो होता क्यों है ये? रूट कैनाल बेसिकली तब करवाते हैं लोग जब किसी टूथ में आपका इन्फेक्शन हो गया। आपको टूथ में इन्फेक्शन हो गया, सड़ रहा है, गल रहा है, आप गए डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने आपको बोला कि रूट कैनाल करवा लो। रूट कैनाल आपने करवाया। रूट कैनाल करने के टाइम पे दे ड्रिल इट एंड देन दे फिल इट विथ मर्करी एंड अदर मटेरियल्स, राइट। जब वो फिल करते हैं और जब वो उससे पहले वो क्लीन अप भी करते हैं, जो भी आपका इन्फेक्शन हुआ होगा, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उस बैक्टीरियल इन्फेक्शन को वो लोग हटाने की कोशिश करते हैं। बैक्टीरियल उसको क्लीन करने के बाद उसका जो टूथ का जो कनेक्शन है, क्योंकि वो दर्द देगा ना, तो उसका टूथ का जो कनेक्शन है आपके ब्लड वेन से, उसको काट दिया जाता है और फिर उसके ऊपर जो फिलिंग का काम है वो किया जाता है। अब आप इस बात को ध्यान से समझिए, जब आपका टूथ का जो कनेक्शन है ब्लड वेन से, उसको काट दिया गया, इसका मतलब क्या है? आपका यदि ब्लड वेन से काट दिया गया तो आपके इम्यून सिस्टम से उसका काट दिया गया। इसका मतलब है कि उस टूथ के अंदर जब भी कोई भी इन्फेक्शन रह गया और यदि डेड सेल्स रह गए, उस डेड सेल्स के ऊपर बैक्टीरिया का जन्म होने लगेगा। उस बैक्टीरिया, जो भी बैक्टीरिया, वो अपना फैलाव करेंगे, अपने आप को डबल ट्रिपल स्टार्ट करेंगे, प्रजनन क्षमता उनकी बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो दे आर ईटिंग अप ऑल योर डेड सेल्स विद इन दैट टूथ, राइट, जहाँ पर रूट कैनाल किया गया है। अब ये समझने की बात है कि चूँकि उनका इम्यून सिस्टम से कनेक्शन काट दिया गया, आपके ब्लड वेन से कनेक्शन काट दिया गया है, तो उनको बहुत ही आसान हो जाता है मल्टीप्लिकेट करना अपने आप को। लेकिन फिर वो आपके ऑर्गन तक कैसे पहुंचते हैं? तो ये जो टूथ मेरिडियन का जो ट्यूब है, दे आर कनेक्टेड टू योर ऑल ऑर्गन्स। हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था वीडियो में कि हमारे टूथ मेरिडियन जो है, दे आर कनेक्टेड विद आवर ऑर्गन्स। वो जो ट्यूब है, वो ट्यूब में एक बैक्टीरिया आराम से जा सकता, एक बैक्टीरिया उसमें आराम से ट्रैवल कर सकता। एंड दैट इज़ हाउ दीज बैक्टीरिया, इन्फेक्शनल जो बैक्टीरियाज हैं, वे ट्रैवल करते हैं आपके टूथ मेरिडियन से उस जगह तक, उस ऑर्गन तक, और फिर अपने आप को डुप्लीकेट, रिप्लिकेट करते हैं और आपके शरीर में अदर जगह पे, अदर प्लेसेस, अदर ऑर्गन्स पे आपके शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। वहाँ पे आपको इन्फेक्ट करते हैं। तो ये समझने की बात है कि चूँकि इसका कनेक्शन हमारे ब्लड वेन से काट दिया गया, हमारे इम्यून सिस्टम से काट दिया गया, तो जो हमारा इम्यून सिस्टम जिसको काम करना था, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकना था, वो अब रोक नहीं पाएगा। एंड दैट इज़ हाउ हमारे टूथ मेरिडियन जो है सालों साल अपने बैक्टीरियल इन्फेक्शन को, उस बॉडी ऑर्गन्स को इन्फेक्ट करते रहते हैं। एंड दैट इज़ हाउ यू गेट इनटू योर क्रॉनिकल डिजीजेस। So in doing the testing of the bacteria, we found that there are, in root canals, 53 different bacteria. 28 of them are directly involved with the health of the heart, that they are known from the scientific literature to create certain heart conditions. Some of them specialize in attacking the heart valve. Many of them cause what's called endocarditis, inflammation of the vessels inside the heart. And we now have studies from the Journal of the American Dental Association that show
that when you have one or more root canals in your mouth, statistically speaking, you have a greater chance of heart attack, plain and simple. We know with increasing evidence that the cause of coronary artery disease is inflammation of the endothelium, the lining of the blood vessel wall. What we need to do in medicine then is work out what is inflaming the wall of the artery, because ultimately what the body does is the body tries to seal off the inflammation. The body uses cholesterol, it uses calcium to seal off that inflammation. You're getting what's called a plaque. The same plaques that we get on our teeth, which is basically bacteria covered by a biofilm, then covered by a layer of calcium, is exactly what we're seeing in coronary arteries. So the trick is not to try and get rid of that cholesterol, which is going there, is being put there by the body to protect us against the inflammation. The trick is to try and work out what is causing the underlying inflammation. Dental infection is a big part of that because of the seeding of bacteria from the mouth straight into the bloodstream, then to the coronary arteries. ना आगे के वीडियो में मैं आपको उन सभी डॉक्टर्स का आपको टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा, जैसे डॉक्टर थॉमस ई लेवी एमडी हैं, डॉक्टर ग्रेग एमर्सन हैं, डॉक्टर स्टुअर्ट नुनाली है. तो देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु आर स्पीकिंग अगेंस्ट इट. देयर आर सो मेनी डॉक्टर्स हु आर कमिंग अप विद द ट्रुथ अहेड एंड दे आर शोइंग अस द जो मेडिकल एविडेंस हैं, जो साइंटिफिक एविडेंस हैं इस रूट कैनाल के अगेंस्ट में, दे आर शोइंग इट टू अस. क्या सच्चाई है, क्या गलत है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे. लेकिन सबसे पहले किसी भी आदमी का एक जजमेंट जब होता है तो वो जजमेंट दोनों तरफ के पहलुओं को देखने के बाद ही होता है. यदि आप रूट कैनाल करवाना चाहते हो, आप कराओ, शौक से कराओ, लेकिन उसके पहले उसके बारे में जानने की पूरी कोशिश करो, उसके दूसरे पहलुओं के ऊपर भी गौर करो. यदि इस बात में 5% की भी सच्चाई यदि होती है तो आप अपने जीवन को खतरे में डाल रहे हैं. इतना समझते हुए मैं आपको आगे आने वाले वीडियो में, आगे आने वाले समय में आपको उन सभी डॉक्टर्स के टेस्टिमोनियल्स दिखाऊंगा. आप देखो, समझो और उसके हिसाब से कभी भी यदि रूट कैनाल करवाने जाते हैं या लोगों को सजेस्ट करते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से उन्हें दिखाएं, ताकि उनको भी समझ में आए कि अच्छा, रूट कैनाल से ये हो सकता है. अब इस बात में इस बात का खंडन एडीए सीडीसी करती है. सीडीसी बोलती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी साइंटिफिक एविडेंस नहीं है. लेकिन कुछ डॉक्टर्स ने, जैसे स्टैटिस्टिकली उन्होंने देखा कि भाई रूट कैनाल किए हुए 150 औरतों में 147 औरतों को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है एंड बहुत सारे लोगों को ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हुआ है. कुछ जगहों पे तो टेस्टिंग एविडेंस के नाम पे जैसे ही उन टूथ कैनाल्स को निकाला गया जहाँ जिसका डायरेक्ट कनेक्शन था आपके ऑटोइम्यून सिस्टम से, तो जैसे ही उनको निकाला गया वैसे ही आपके कमर का दर्द ख़त्म हो गया. तो कहने का ये मतलब है कि आप पहले से ही प्रेजुडिस मत पालें. आप दोनों तरफ के पहलुओं को सुने और उसके हिसाब से अपना फैसला लें और आगे बढ़ें. आइए सुनते हैं इन सभी डॉक्टर्स के टेस्टिमोनियल्स को और समझते हैं कि क्या यह हमारे लिए सही है, गलत है. जो है वो डिसीजन आपका है. इस वीडियो से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें. मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार. आप कंटिन्यू रखें, आप इन टेस्टिमोनियल्स को ज़रूर सुनें. धन्यवाद. Create a void, and so it's not uncommon for a cavitation to occur next to a root canal. The most common spots are the wisdom teeth. The wisdom teeth are unique in that there are 4 circuits going through it instead of just 2. It's heart, small intestine, and the sympathetic and parasympathetic systems. And so you see people whose adrenal glands are not working, and it's because they have infection in where their wisdom teeth were taken out, because you can have infections in the bone where your wisdom teeth were taken off for 50 years and essentially have no pain there, but it completely destroys your life. When you don't have enough adrenaline, you have trouble going to sleep, and then you have trouble dealing with stress. And then it gets to where you can't stand any stimulus. So you don't like loud music, you don't like loud noises, you can't be around a rowdy crowd, you can't be around people who are arguing. Now, what I just described is a person whose life's in the toilet. For instance, I myself had my wisdom teeth out when I was in dental school. About 30 years later, I developed a heart arrhythmia, and nothing seemed to help it. I would take intravenous vitamins, I tried homeopathics, nothing was doing it. And all of a sudden I said, wait a minute, let me check, see if I have a cavitation
That wisdom tooth, which is on the heart meridian, you see, was causing the problem. If you can get a good normal 3D cone beam x-ray of your jawbone, then you do have a much higher reassurance that you don't have this cavitation process going on inside the jawbone as well. And if the dentist unroofs that and scoops that stuff out and then removes that ligament and then that heals, that patient can get well. One of the questions that we get is, are there things I can do prior to my procedure to increase my ability to heal properly from a surgical procedure like a cavitation or from a root canal removal? One of the biggest things that you can do is to have proper nutrition, be eating a clean diet, be getting enough proteins and enough vitamins and minerals. When that tooth comes out, you want to make sure that the socket is cleaned out really well. You want to remove the periodontal ligament. If there's infection, you want to get rid of the infection, and then you let it heal. I like to let the body fill it in with its own natural bone. You have to wait at least 3 months for that. You want to check it and make sure that it did heal, that you don't have the cavitation. But let's say it's healed. How do you replace the tooth? Well, you have different options. Of course, an option is you don't replace it, you leave it alone. Another option is you can use something removable, which most people don't like. It's not very comfortable. The other option is you could put a bridge in, where you're bridging that space. And there are two types of bridges. The traditional bridge, which I don't like, is where you have to mutilate the teeth on either side of that space to hold the missing tooth. And the problem with that is when you mutilate those teeth, you increase the odds that those teeth could need a root canal in the future. So I prefer to use a bonded type bridge, where the abutment teeth, as they're called, or the supporting teeth, have minimal preparation, and that holds the missing tooth. Now, the only downside with that really is that it periodically will come loose and need to be re-cemented. Now, of course, the best option is to take really good care of our teeth and gums with a comprehensive dental program so we never need a root canal. But let's say that hasn't happened, like me and a lot of other people I know. Let's say there was trauma involved and you didn't get an option, can't really walk around with no front teeth. It's not very good for business. Am I going to have some sort of bridge? Am I going to have some sort of implant? An implant is where you're going, and you're going into the bone, and you're placing what traditionally has been a titanium implant. Now, today, we have also ceramic implants. The advantages and disadvantages, well, the titanium, the problem is you're putting a metal into the bone. Titanium itself is known as a hapten. It means the ions in the titanium itself can trigger autoimmune. So if you are genetically predisposed to something like Hashimoto's, celiacs, scleroderma, lupus, rheumatoid arthritis, it might get turned on, and even if that implant is removed, the trigger's already been pulled. So now you've got problems that you didn't have. Plus, I've got metal that is directly going into my meridian system. So it's like sticking a spoon in an electric socket and bending it around and sticking it in the bottom part, and it shorts out the whole meridian. What we're finding is that many physicians that are referring their patients here, and also patients that are doing their own research, are desiring to have no metal in their mouth. They want to eliminate anything that could create a current, and that's why we now have zirconia implants, which is, it's more like a ceramic. It's a complete non-metal implant that looks the same as a titanium implant and functions the same, but is considered much more biocompatible for the tissue and for the patient. And it interferes with the body much, much less than titanium implants. I do not say zirconium implants are 100% good, but they are much better tolerable to the body than titanium implants are. So good medicine would include this, and that's what we want to do. We want just the best medicine. We want to give people things that don't hurt them more than they help them. Root canals are probably one of the most pernicious, toxic, hidden influences on your health. And if you're struggling to understand why you're so sick and you have multiple root canals, please examine that issue.